Hi guys, I am Priyanka. Welcome back to my channel. Here on this channel, I share a lot of lifestyle related content. I also do fashion, beauty, skincare and travel related content. So stay tuned for that and subscribe to my channel if you haven't already. So this video is a little bit different. So in this video मैं आपके साथ share करने वाली हूँ my labor story, my labor and birth story basically. I'm going to share my positive experience with you. I had a natural delivery and that too without epidural. I had my baby on the 14th of September and I wanted to share my experience with you because if there is any first time mom out there and she's researching on these sort of things and looking for labor and delivery stories लोगों के जो उनको लगता है कि उनको हेल्प करेंगे. सो आई जस्ट वॉन्टेड दिस वीडियो टू बी काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर मॉमीज आउट देयर. So it all started, like my labor basically started when I entered my 37th week, completed my 36th week and started my 37th week. It all started in like one fine evening. We had a very normal day. We were just chilling and normal सा दिन था, कुछ अलग नहीं हुआ था उस दिन पे. like मैंने कोई strain नहीं किया था, nothing. एंड रात को मुझे थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ था एंड इट वॉज इनिशियली अ ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ अ डिस्चार्ज. सो आई पैनिक्ड अ लिटिल बिट बिकॉज इससे पहले भी मुझे 6th मंथ में थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ था एंड एट दैट टाइम ऑल्सो हम लोग थोड़े से पैनिक हुए थे एंड हम लोग ने डॉक्टर को कंसल्ट किया था. ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट इन टाइम शी हैड टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड दे had given me a lot of medicines and all that to stop the bleeding and control everything and all that. So this time again the thing happened wherein thoda sa brownish discharge hua. So I sent the picture to my doctor and then she called me in the morning. Obviously this happened at night. So उन्होंने मुझे morning में call किया and she told me कि you come to the hospital and meet me. So around 12 p.m. I think this was the Monday before that. My delivery happened on Saturday and this was on Monday. Like the Monday prior to Saturday. So तभी हम लोग गए hospital. Then obviously because of the bleeding she had to check me internally. So उन्होंने मुझे internally check किया and she told me that I was 1 centimeter dilated. And then she told me nothing to worry about. ऐसे होता है, like you are dilated but then it takes time. It takes weeks also sometimes for you to dilate completely and start like your active labor. She also told me to continue with my exercises and whatnot. जो भी तुम daily basis पे कर रहे हो वो तुम करते जाओ. तो आई वॉज लाइक ओके कूल, आई विल डू दैट. तो ये सब मेरा चल रहा था. आई केम बैक होम, आई डिड माई एक्सरसाइज एंड वॉक इन द इवनिंग एंड वो सब मैंने किया. एंड देन आई ऑल्सो जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन कि यहाँ पर मैंने when I started with my pregnancy I also wanted to do गर्भ संस्कार. So 4th या 5th मंथ में मैंने सब्सक्राइब किया था iMoms करके एक फैसिलिटी है. So they provide गर्भ संस्कार workshops and all sorts of assistance to you when you are pregnant in your pregnancy journey. So they assign you with a care manager, a dietitian and a yoga instructor. Dietitian ने मुझे actually बोला था when I completed my 36th week, she told me to start with raspberry leaf tea, which really helps you in opening up your cervix and it really helps you in a smoother delivery process and it also overall helps you in maintaining your uterus ka health. So I had started my raspberry leaf tea when I completed 36th week. So actually मैंने just start ही किया था. I wasn't doing anything before 36th week. So yeah, so that's about that. So सिर्फ वही मैंने start किया था to actually open up my cervix and nothing else. तो मैं आई डॉक्टर के पास से on Monday 1 centimeter dilated and evening में like I told you I did my walking and I also did a few squats and so guys, sorry, I just forgot. I mixed up days. It was not Monday, it was Friday. So basically Friday morning को मुझे Friday morning, Thursday night को actually मुझे bleeding हुआ था and Friday morning को we went to the doctor and that's when I found out that I was 1 centimeter dilated. So now coming back to the story and so basically Friday night हाँ फ्राइडे नाइट को वापस थोड़ा सा हल्का सा हुआ था ब्लीडिंग एंड देन आई वॉज लाइक ओके वी विल वेट टिल द मॉर्निंग कि क्या हो रहा है. एंड देन सैटरडे मॉर्निंग टर्न्स आउट इट वॉज द 14th of September. सैटरडे मॉर्निंग को अगेन आई ब्लड फॉर like 2-3 times I had some bleeding and then I started researching on
the sort of bleeding that I had, because it also had a little bit of mucus like thing along with it. So मैंने research किया and I found out that it is a, I also sent the picture to my doctor as well as my गर्भ संस्कार की care manager, and then she told me कि शायद it could be your mucus plug that has come out. So basically a mucus plug is something that separates or protects your gestational bag or your baby from the outside world ka bacteria and everything. It's like a plug that prevents any bacteria from getting inside your uterus. So वो निकल गया था, एंड फिर मैंने वो फोटो डॉक्टर को भेजा. देन डॉक्टर टोल्ड मी टू कम इन राइट अवे, because I had that episode 3 times, like धीरे धीरे करके I think it was coming out. So I went to the doctor and she again checked me internally. At this point internal checkups were not that painful. Okay, just a disclaimer here. So then I went to the doctor and she checked me internally, and then she told me that I was 3 centimeters dilated and that I was into active labor. This is what she told me and I was not prepared at all, क्योंकि हम लोग expect कर रहे थे कि शायद वही छोटा मोटा bleeding वापस हुआ होगा and then she'll give me some medicines or something and then she'll maybe perhaps ask us to come back after a few days for a checkup. But that was not the case. Then she called my husband and told him that she is in active labor and she could feel a sort of a membrane or a vein or something when she was checking me internally, and she told me we may have to do an emergency C-section. And at that time मैं बहुत disappoint हो गई थी, because I had always wanted to deliver my baby naturally, because this was my first time and I wanted to experience that, and I also have a thing about surgeries and all that, so I did not want to get any sort of surgery, and that was my birth plan, right, and I wanted to stick to that. As I told you, मुझे normal ही कराना था, like natural ही delivery कराना था. So I reached out to my care manager from my संस्कार app and she told me कि C-section करने जैसा तो कुछ है नहीं, and she told me कि keep me updated on the further process, we'll see. And in the meantime my doctor also told me कि एक sonography कर लो, emergency sonography कर लो. In that we'll get to know कि how is the baby का position and weight and everything, final details we'll get to know कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो then we did the sonography and turns out everything was fine. The only thing was कि एक loop थी बेबी के नेक में, only single loop, and which is quite common and ये होता है, इसके साथ भी vaginal delivery हो जाती है. So then we were not worried at all. So I again reached out to my care manager. I sent her the reports and told her कि ये एक situation है. I don't find that there's any need to do any sort of C-section. And she immediately agreed with me. And then she told me कि आप एक काम करो, अगर डॉक्टर को लग रहा है there is an emergency situation, ask her to induce you. इंड्यूस करके आप ट्राई कीजिए कि हो रहा है कॉन्ट्रैक्शंस, पेन आ रहा है, तो यू गो फॉर नेचुरल डिलीवरी ओनली. एंड वी डिड एग्जैक्टली दैट. So उसके बाद they admitted me to casualty and वहाँ पर they inserted a gel sort of a thingy, like कोई टाइप का एक जेल था, they inserted it into me, like vaginally they inserted, and उसके बाद they told me कि ये induce करने वाला जेल है, basically it releases some sort of hormones which triggers contractions. And then I was like okay. So it didn't feel anything at that point in time, but within 5 minutes I started getting those pains that started feeling like period like pain, very very mild period like pain, but gradually it started increasing. And but what they told me is for you to deliver the baby naturally, the pain intensity has to be like intense, like it has to be very strong. And obviously वो जेल से तो इतना कुछ होने वाला नहीं था. And then after I think half an hour they also put an NST machine to monitor baby's heartbeat and all that. And उसके बाद after half an hour they shifted me, like in this all this while I was so confused कि सब कुछ साथ में हो रहा है, and I was very confused and I wasn't even prepared for this. My hospital bag हम नहीं लेके गए थे hospital में, everything was at home, like we were not expecting कि ये होगा. I was very very confused. Obviously DB, my husband, was doing a lot of formalities. He was getting the admissions form in place, and in that meantime my mom also came and she was there with me for some time. But obviously inside तो वो allow नहीं करते हैं तुम्हारे relatives को.
तो बेसिकली ये सब चल रहा था एंड आई स्टार्टेड गेटिंग दोज पीरियड लाइक पेन्स एंड उसके बाद तो मैं भूल ही गई, लाइक टाइम स्पेस का कोई मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या चल रहा है, व्हाट डे इज इट डे और नाइट और वॉट एवर. आई वॉज जस्ट इन दैट लूप and I was constantly back of my mind subconsciously मैं baby के heartbeat सुन रही थी and I wanted to make sure that everything was okay with the baby. So I wasn't allowed to meet my husband or anyone, मतलब I was allowed to but he was busy doing some sort of things. So एकदम ही ज़्यादा confusion चल रहा था and this went on for I think 1.5 hours. इसके बाद में they told me कि now you can move to the room, we'll be moving you to the room IV, and through the IV they started injecting pitocin. Pitocin is again a way to induce labor. Basically it also triggers some sort of hormones in you which triggers your contractions and the labor pain. तो जैसे ही उन्होंने फर्स्ट बॉटल पिटोसिन का वो किया, contractions went from 1 to 10. Like the pain was so intense, like very very intense pain, like the pain that I have never felt before and मैं explain भी नहीं कर सकती कि कैसा टाइप का पेन था. It was almost like pressure sort of a feeling कि तुमको एक बहुत ज़्यादा pressure आ रहा है, but it is a period like pain also, but at 100 level 100. They kept checking me internally. जो भी डॉक्टर आ रहा था everyone was coming and checking me internally, and at that point the internal checkups were so painful, मतलब वो contractions से ज़्यादा, and I was just screaming whenever they were checking me internally, and within this while every other doctor was coming and checking me internally. And then they told me that so I asked for an epidural and I had told my doctor कि मुझे epidural के through करवाना है करके, because I don't think I would be able to kind of take that pain. So the junior doctor told me, इस टाइम पे मेरी senior doctor नहीं आई थी, like मेरी गायनी नहीं आई थी. The junior doctor told me कि हाँ we will give you epidural, but for that you will have to be like your cervix has to be dilated like 5 to 6 centimeters. So I was like okay ठीक है. तो I was like कि चलो ठीक है, थोड़ी देर तक और ये पेन सहन करना है. But in that moment ऐसे नहीं होता that you are not able to handle हो जाता है. मतलब I don't know what is that calling or what is that effect that the labor has on you. I wasn't screaming or anything. I was just screaming during the internal checkups. Contractions के time पे I was focusing on my breathing. I was trying to remember कि इसमें से मुझे क्या, मतलब it was I am doing all this for my baby and there are going to be better times ahead. मतलब ये सिर्फ आज की बात है. I had to constantly remind myself of that. Junior doctor got concerned and she told my husband कि इनको जब भी शायद C-section करना पड़ेगा emergency वाला, ऐसा उन्होंने बोला, because कभी जब भी इनको contractions आ रहे हैं, बेबी के हार्ट बीट्स ड्रॉप हो रहे हैं करके, लाइक इट वाज गोइंग अप टू 50 और 60 ऐसा कुछ बोला उन्होंने. तो देन वी गॉट रियली कंसर्न, बट आई वाज लाइक मैं इतने ज़्यादा पेन में थी कि मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाई ज़्यादा. ऑब्वियसली द बेबी वाज आल्सो ट्राइंग एंड डूइंग द मेहनत ऑफ पुशिंग herself down. That's why it was happening, the heart rate was dropping. तो उन्होंने बेसिकली बोला कि सी सेक्शन करना पड़ेगा शायद से. बट उसके बाद शी अगेन चेक मी इंटरनली आफ्टर सम टाइम एंड देन शी टोल्ड मी एंड देन आई आस्क्ड हर. इट वाज आफ्टर हाफ एन आवर 1 hour, आई थिंक 1 hour तक मैंने ये सेंड किया. टचवुड सब कुछ बहुत ही फास्ट हो रहा था एंड आई एम वेरी ग्लैड कि सब कुछ फास्ट हो गया. शी चेक्ड मी अगेन इंटरनली एंड देन आई आस्क्ड हर कि कितना डायलेशन है अभी करके, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर मी टू गेट डायलेटेड एट 6 सो दैट आई कैन गेट द एपिड्यूरल. यही मेरा गोल था basically. She comes in, she checks again internally and then she tells me that you are 7 to 8 centimeter dilated. So I was like what the hell, मतलब where is my epidural, just give me my epidural so that I can be out of this pain and I can actually kind of experience this whatever is happening and not be in this constant hazy state what I was in at that point in time. तो देन शी टोल्ड मी हाँ मैं डॉक्टर से बात करके बताती हूँ करके. एंड इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम माई डॉक्टर केम इन. वो आए एंड देन शी मैन्युअली लाइक आई थिंक शी ब्रोक माई वाटर and it like a gush of like a pool of water came out of me. It was like I peed my pants but मैंने पी किया नहीं है but अंदर से आ गया है पी. So a lot of water came out and then dripped. So after some time, like I think after 10 or 15 minutes, the junior doctor said कि अभी इनको OT में transfer करेंगे. So again with that belly with those contractions, like intense
कॉन्ट्रैक्शंस. एक स्ट्रेचर पे से दूसरे स्ट्रेचर पे मुझे खुद को शिफ्ट होना था, एंड दे वर नॉट लेटिंग मी स्टैंड ऑल्सो. आई डोंट नो फॉर वॉट हाउ आई डिड दैट. एंड फिर बेसिकली ओटी के बाहर मुझे उन्होंने रखा था. लाइक माई आई थिंक दे वर प्रिपेयरिंग और क्लीनिंग अप और समथिंग. तो ओटी के बाहर आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन अ स्ट्रेचर, नोबडी वॉज अराउंड मी, एंड सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग एक सॉर्ट ऑफ अर्ज टू पुश, एंड आई स्टार्टेड पुशिंग अपने आप ही. सो ये ना मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था और लोगों से सुना, लोगों से एज ए नॉट इवन रियल पीपल. मैंने ये वीडियोस में देखा था एक्चुअली, बर्ड डूलाज एंड ऑल बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में, दैट फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स नाम की एक चीज़ होती है, वेर इन योर बॉडी डज द वर्क फॉर यू. तुम्हारे पेट के यूट्रस के मसल्स खुद वो इजैकुलेट करने को ट्राई करते हैं बेबी को आउटसाइड. एंड आई नेवर थॉट कि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करूँगी, एंड बट ये चीज़ हुई. आई स्टार्टेड फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, लाइक आई वांटेड टू पूप, बट माई स्टमक वॉज लाइक ऑलमोस्ट शिवरिंग. मतलब मेरे यूट्रस के मसल्स वर ऑलमोस्ट लाइक शिवरिंग ऑन इट बाय इटसेल्फ, trying to push out the baby, I think. And this was a feeling, it was very strange. मतलब ये तो कभी कोई किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट इट वॉज नॉट दैट बैड ऑनेस्टली. मतलब उस टाइम पे यू जस्ट फील द अर्ज टू पुश एंड पुश. तो आई स्टार्टेड पुशिंग. एट दैट पॉइंट मैं ओटी के बाहर थी. आई डिड नॉट केयर कि डॉक्टर है नहीं है, कौन नहीं है. आई थिंक ह्यूमन बॉडी इज सो ग्रेट दैट यू नो विदाउट, ऐसे होते थे ना पहले डिलीवरीज विदाउट डॉक्टर एंड ऑल, आई थिंक ऐसे ही होते होंगे. सो बेसिकली आई स्टार्टेड पुशिंग देयर एंड देन आई वॉज ट्रांसफर्ड टू द ओटी अगेन. फ्रॉम दैट स्ट्रेचर आई हैड टू गो ऑन द ऑपरेशन टेबल, लाइक ऑपरेशन थिएटर वाला जो टेबल होता है मेन, वहाँ पर मुझे खुद से ही शिफ्ट होना था. विद दैट पेन, विद दैट अर्ज टू पुश, विद दैट एनएसटी मशीन ऑल अराउंड मी, एंड with that sort of a belly and everything, and the tailbone pain also, because मुझे 2 दिन से ही tailbone में बहुत ज़्यादा पेन था, because the baby's position was such that it was pressing down on my tailbone. So I somehow again moved on the operation table, and I asked the doctor कि doctor, can I get my epidural now? And then straight up she's telling me कि नहीं अभी तो एपिड्यूरल नहीं मिल सकता, यू आर ऑलरेडी डायलेटेड, एंड यू नो हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज तुम्हारी बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप हो रहा है, वी कांट रिस्क एपिड्यूरल एंड ऑल दैट, अभी टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए. एंड आई वॉज शॉक्ड, लाइक मैं वापस बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि मतलब हाउ कैन शी डू दिस टू मी, मतलब ये कैसे हो सकता है, लाइक हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस विदाउट एपिड्यूरल विद सो मच पेन. एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पेन इससे ज़्यादा और बढ़ेगा. ऑनेस्टली मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इससे ज़्यादा पेन होगा और, बट थैंकफुली what she told me is, you just listen to my voice, blur out everything, I will deliver your baby safely, is what she told me, and she assured me. So I was like ठीक है. And then she told me कि जब भी अभी तुमको पेन आएगा just let me know. तो मैंने फिर उनको बोला जैसे जैसे मुझे पेन आ रहा था, आई टोल्ड हर, एंड पेन के साथ ही इनको इंटरनल करना होता है, टू पुश whenever I tell you. पुश बेसिकली लाइक यू पुश व्हेन यू गो टू पॉटी, वैसा टाइप का तुमको पुश करना है जब भी तुमको पेन आएगा. फर्स्ट टेल मी कि पेन आ रहा है एंड देन आई टेल यू टू पुश. देन आई वाज लाइक ठीक है ओके. तो एंड ऐसे हुआ, आई थिंक 2 or 3 times आई टोल्ड हर कि पेन आ रहा है. शी टोल्ड मी पुश 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 पुश, वी आर ऑलमोस्ट देयर. एंड मैंने पुश किया. ऑन द 4th or 5th पुश आई थिंक समवन प्रेस्ड ऑन माई बेली. ऐसा मुझे याद है या मैं ड्रीम कर रही हूँ, ये मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पेट पे मुझे थोड़ा सा प्रेशर दिया. एंड देन आई फेल्ट अ स्क्विशी थिंग लाइक come out of down there, and डॉक्टर ने निकाला वो बेबी, एंड लाइक माई बेबी गर्ल वॉज हेड डाउन, एंड उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आज दिन में पहली लड़की हुई है. एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी, एंड आई जस्ट फेल्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वॉट टू फील ऑनेस्टली. आई जस्ट वॉज लुकिंग एट द नर्सेस अराउंड मी, एंड सॉर्ट ऑफ गिविंग देम अ वेरी प्राउड सॉर्ट ऑफ अ लुक कि यू नो ओ माई गॉड, लाइक यू सॉ व्हाट आई डिड, ऐसे टाइप का मैं लुक दे रही थी उनको. मतलब इट वॉज नॉट इमोशनल, आई वॉज नॉट फीलिंग इमोशनल, आई वॉज नॉट फीलिंग कि कुछ भी मुझे फील नहीं हो रहा था. आई वॉज जस्ट very happy. I had a big smile on my face, like a big smile on my face. And immediately जैसे उन्होंने बेबी को निकाला बाहर, my baby cried, and I was like I was like happy कि चलो like everything is fine, like that I had that intuition कि everything is fine.
So obviously they took the baby away for cleaning and कुछ check करने के लिए उन्होंने वो लेके गए for some time, like 2-3 minutes I think. And in that meantime the doctor was trying to deliver my placenta. Now at this point अब मेरा adrenaline I think drop हो गया because baby आ गया बाहर and I started feeling so tired after this. इसके बाद ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है कितने टाइम में प्लेसेंटा उन्होंने निकाला एंड उसके बाद विद इन 2-3 मिनट्स आई थिंक दे गॉट द बेबी एंड जस्ट मेरे चीक के यहाँ पर उन्होंने बेबी को लगाया. आई विल इंसर्ट अ पिक्चर इन लाइक समवेयर इन the screen, on the screen you can see that picture. And then I just kissed my baby on the cheek and then I was so happy, like I was a mother, so it was a very different feeling. And I just felt कि ये जो भी सब कुछ हुआ इतने देर में was so worth it because something so beautiful came out of it. And then उसके बाद में the pain again started. Basically my doctor started cleaning my uterus I think, and then she gave me one stitch also. I did not have an episiotomy, but एक stitch tearing के वजह से I think एक stitch लगा था नीचे. So then she was doing that, but that process took like half an hour and that throughout topical वो दिया था, anesthesia दिया था मुझे, but obviously it was wearing off very quickly. So she told me कि इससे ज़्यादा anesthesia मैं नहीं दे सकती तुमको, you have to bear little bit of pain. Now you can go to your room. And इसके बाद तब तक बेबी को वो लोग I think pediatrics वाले डिपार्टमेंट में लेके गए थे for the final like checkup and everything. And मैं बाहर आई OT से obviously on a stretcher, and I met my husband and I met my mom. And husband को believe नहीं हो रहा था कि इतने जल्दी like within half an hour 45 minutes सब कुछ हो गया था. He was expecting कि time लगेगा, रात हो जाएगी whatever, but I went into the OT I think at 8:45 or something, and 9:34 को मेरी बेबी हुई. And I think by 10 PM I was out of the OT. Not even 10 PM I think, उससे भी थोड़ा पहले I was out of the OT. And we were so happy. And मेरे husband को believe ही नहीं, उसको लगा कि मुझे epidural दिया गया है. I told him कि मैंने naturally किया, epidural भी मुझे नहीं दिया गया. And then he was so shocked, but at the same time we were so happy कि ये मैंने कर लिया. So basically यहाँ पर conclusion मुझे ये बोलना है कि you know everything is manageable. मतलब लोग बोलते हैं it is painful and it is painful, but ऐसा नहीं है कि you can't do it. I basically think that our bodies are built to birth. And it is manageable. You just have to you know keep focusing on yourself and you have to just remind yourself that you are made for this. And सब लोग करते हैं यार ये चीज़, मतलब कोई मतलब बड़ी चीज़ तो है ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे. यू आर मेड फॉर दिस एंड यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस. बी स्कैर्ड अबाउट इट. आई थिंक माई एक्सपीरियंस वॉज very पॉजिटिव. एंड आई थिंक ever since the process started at 5 PM, I had my baby at 9:30 PM. मतलब I have heard stories of people you know being in labor for 18 hours, maybe first time labor है तो 20 hours also I have heard, but मेरा 5-6 hours में हो गया. And I think being active during the pregnancy, having that raspberry leaf tea, doing squats regularly and walking really helped. I was not doing anything exclusive, मतलब over and above मैं कुछ नहीं कर रही थी, just घर का थोड़ा बहुत इधर उधर का काम. So yeah, that is what I wanted to share in this video. And if you guys have you know any more questions about you know my birth story or anything related to birth or pregnancy, because everything in my pregnancy was first time, like this is my first baby, so everything was experienced by me for the first time. And मैंने अपने research से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, and I would love to share those things with you guys. And obviously I would also love to make another video on my postpartum journey and my breastfeeding journey as well. So if you guys are interested, do let me know in the comment section, and I love to do that video as well. And इस video पे भी if you have any questions, do let me know in the comment section, and I'd love to do a Q&A video, or I'd love to chat with you guys in the comments. And I think that's about it for this video, and I'll catch you in the next one. Subscribe to my channel and like this video and share it with you know mommies or to be mommies who you think would be benefited out of this video. And thanks for watching.